Good morning. You're watching the news here at CNN News 18. My name is Toya Singh. Right here on the show, through the day today, we're going to be walking you through all of the country's top stories. Our first story takes us to Rajasthan, where a late-night drama erupted in Jaipur as the Congress Legislative Party meet was cancelled after the Gehlot camp, that is, of course, the camp of the Chief Minister Ashok Gehlot, it rushed to the Speaker's residence. Now, 92 Congress MLAs in Rajasthan have threatened to resign after reaching the Speaker, that is CP Joshi's residence. Essentially, there is now a crisis within Rajasthan. Remember, the Congress is set to have elections to its top post, the presidential post, in October. Ashok Gehlot was likely to be a front contender for that post, but he was going to possibly resign from being the Chief Minister before he filed his nomination position for that post. Now, whether or not he can step down from the Chief Ministerial position, who will take his place, and will that leader be from within his camp, or will it be Sachin Pilot, of course, the other very senior leader in the Rajasthan Congress and the leader who it was believed could possibly step into his shoes? These are the big questions that remain ahead for the Congress party and in specific for the Rajasthan Congress. These are questions that we will be taking a deeper look at today. But take a look at the political reactions that followed on your screens now. 17 तारीख के बाद मीटिंग बुलाते हैं, चुनाव हो जाते कर जाते सारा। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं तो कहा था मैं अभिभावक हूं, तो मुख्यमंत्री जी अभिभावक कहकर और एमएलए की राय को महत्व नहीं देंगे क्या? अशोक गहलोत जी को भी महत्व देना चाहिए। मैं कह रहा हूं उन्हें खुल के, अशोक गहलोत जी की भी जिम्मेदारी है। तो आप इनसे पूछो तो ये क्या चाहते हैं? अभी अशोक गहलोत जी के पास एक ही तो पोस्ट है, मुख्यमंत्री है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दीजिए तब बात करेंगे। कौन मना कर रहा है? वो तो खुद ही कह चुके हैं। यहाँ एमएलए जी कह रहे हैं एक ही तो पोस्ट है, 92 विधायक है मेरे पास जो गिनती है। That is really for the Congress party to decipher what its internal dynamics are. Obviously, Mr. Ashok Gehlot is clearly sending out a loud and clear message to the Gandhis whose credibility and whose popularity within the party too seems to be completely eroded. But having said that, today I am feeling perturbed about the people of Rajasthan. It is the people of Rajasthan who have to face this and see this. When this government came to power, even then you saw the kind of power politics that played out. 50 days the MLAs were in hostels and hotels and they were trying to just grab power. Rajasthan suffered, and tonight again Rajasthan suffers. Instead of having cabinet meetings to decide as to how Rajasthan can be made rape mukt, danga mukt, aparadh mukt, you have people playing petty political power games at the behest of the Congress First family, and Rajasthan is suffering, and therefore today's images are only a reinforcement of what is going to happen in 2023. People are going to reject this government, they're going to throw them out, and they're going to replace them with a strong and stable government, a double engine ki sarkar very soon. When Mr. Gehlot is clearly giving a strong and a stern message to the Gandhis that he will listen to nobody and he will do what he wants to do on his own. गिरने का तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से पिछले 4.25 साल में 2018 में सरकार के गठन से लेकर जो नारे लगे, जो झगड़ा हुआ, बाड़े में बंद रहे, राजस्थान की पूरी गवर्नेंस को खराब किया, बर्बाद किया, तो ऐसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ये इनके कर्म है, गिर भी सकते हैं, नहीं तो राजस्थान को जरूर गिरा दिया। कांग्रेस तो परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी दोनों ही आधार पर उसकी वापसी तो कतई संभव नहीं है, लेकिन इसमें जरूर कोर्ट में खाज का काम करेगा कि इनका जो अंतर्कल है वो कांग्रेस की बड़ी हार का कारण बनेगा। जो अशोक गहलोत जी को जो जानते हैं राजस्थान में, वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं, तो मोटे तौर पर वो उसी प्रेशर की राजनीति का ही एक उदाहरण है कि इस बहाने वो कुछ न कुछ अपने मन की करवाना चाह रहे होंगे, या कहीं न कहीं जिस तरीके का उनकी डोमिनेंस है वो जो प्रकट करना चाह रहे हैं उसका एक तरीका निकाला उन्होंने। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये सियासी पाखंड से ज्यादा कुछ है। Now, my colleague Poonam Burde yesterday spoke to a group of panelists about the entire political tussle between Gehlot's camp and Sachin Pilot's camp in Rajasthan. Take a look at this. This is going to be our top story through the day today. You know, is this like a preemptive strike by the Congress party? Is it really a selection and not an election? Because Mr. Ashok Gehlot hasn't even
filed for nomination. We don't even know if he is going to be the next top boss of the Congress party, and we already have two national observers in Jaipur trying to find a replacement for him. I think there are two responses for that. That one, Mr. Gehlot has made his intention clear that he will contest for Congress president, which is accepted. And there are other people also who want to throw their hat in the ring. And obviously the Congress party is already prepared to see if we have an election, if it's going to be either unanimous or if we do see an election, as long as either of the people want to contest, and you will see a free and fair election that will be held for the top post of the AICC president on the one hand. On the second hand, I do not think it is wrong for the Rajasthan government and also Mr. Gehlot's cabinet and the MLAs of Rajasthan to also have a plan underway to see what is next. First and foremost, let us realize as the CLP, the Congress Legislature Party, will sit in decision along with the High Command, along with the in charges, Mr. Markin, as well as the observers who have been sent there. They will have a discussion, but make no mistake about it. Finally, what is going to be, who is the chief minister, what is going to be the position in Rajasthan, what is the consensus of the MLAs, everything will be taken into consideration and then a decision will be made. There is not going to be a single MLA who is going to work against the party or the interests of the Congress party whatsoever. Mr. Gehlot, Mr. Pilot and the cabinet is going to ensure of that. Of course, there are a lot of people that would be very vocal about who they want as the chief minister. But when the decision actually comes underway, be very certain that it's going to be consensus based. It is going to be based on what is best for the people of Rajasthan and for the Congress party. And any voices against this decision is something that the High Command is going to talk about and also address and assuage any of their fears. We are going to have a stable government until we go to polls, and nothing and nobody is or are going to obviously try and jeopardize or even take away from that effort, to be very honest. भाजपा के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी है. वहां पर सबको फॉर्म भरने का अधिकार होता है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है. इलेक्शन प्रोसेस में सब लोग निकल कर आते हैं, लेकिन आपकी सहमति से वहां पर अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, क्योंकि एक अनुशासित पार्टी है. और जो लोग अनुशासित होने का केवल दिखावा करते हैं, उनके यहाँ स्थिति खड़ी होती है. जो भारत जोड़ने निकले हैं, उनकी अपनी पार्टी टूटने का कगार पर खड़ी है राजस्थान में. और अभी भी जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर वहां पर जो इनकी रस्साकसी चल रही है, उसमें केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, वही सब घुमा रहे हैं. लोकतंत्र के नाम पर कभी अशोक गहलोत को इस्तेमाल करते हैं, कभी शशि थरूर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ वो कुछ नहीं रहा है. वो यही रहा है कि जो गांधी परिवार तय करेगा वो वहाँ अध्यक्ष बनेगा. तो ये जो नौटंकी है इलेक्शन के नाम पर, इसको बंद करना चाहिए. जो जनता है वो सब जानती है और उसके सामने सारी सच्चाई सामने आ रही है. इनके लिए ये डेमोक्रेटिक होने की कई बार दुहाई दे रहे हैं. किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो फॉर्म भरने जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो पहले परमिशन लेकर आ रहा है सोनिया गांधी जी से, और वो जो राष्ट्रीय वो परमिशन देंगी तब वो जाके चुनाव लड़ेगा. फिर वो क्या चुनाव लड़ेगा? दूसरा, जो मुख्यमंत्री का चयन आप राजस्थान में करने वाले हैं अशोक गहलोत जी के जाने के बाद, यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि खुलेआम जो सरकार के विधायक और सरकार के मंत्री हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं कि हमें ये स्वीकार नहीं है, हमें ये स्वीकार नहीं है. इनको जयपुर भेजिए थोड़ा, और जयपुर पर फोकस करके इनको दिखाइए कि इनका जो अनुशासन है, डेमोक्रेसी है, वो चल कैसे रही है. आप थोप देते हैं लोगों को ऊपर, क्योंकि आपको एक प्रॉक्सी आदमी चाहिए होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी और मुख्यमंत्री के लिए भी. I believe these elections are going to be a cornerstone and change for the Congress party, and I believe that this is going to be one of the first steps of massive change in what is the Congress party. And I'm also very certain the Rajasthan government is extremely safe. We're going to polls on our development. We're going to polls as a Congress party, not an individual. And we will go to polls and form government again for our performance. Okay, we're going to be keeping a keen eye on that story through the day. Right now, though, we are going to very quickly shift focus to other big happenings right here in the capital. Bollywood actor Jacqueline Fernandez will be appearing before Delhi's Patiala House Court. This is in the 200 crore extortion case linked to the conman Sukesh Chandrasekhar, who is currently, remember, in jail. Now, the case, remember, involves alleged money laundering. The Enforcement Directorate named Jacqueline as an accused in it. Sources inform CNN News 18 that Jacqueline will appear before the special NIA judge at 10 a.m. and that her legal team is likely to move her bail application. Now, remember, the actor was rumoured to be in a relationship with the conman after pictures of the two surfaced online. We're actually showing you visuals on the right side of your screens right now. The ED alleges that Sukesh used money to purchase gifts for Jacqueline, but the actor maintains that her fixed deposits are from her own money and not from what was gifted to her. 'Cause 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 '
And now moving on to a particularly important story down in Karnataka, where a malfunction in the motherboard has severed ambulance lines in the 108 Arogya Kavacha call center in Karnataka, leaving patients in grave distress since Saturday. Now, the situation has taken a political turn. You have the Congress, they've released an official tweet taking a jibe at the Karnataka Health Minister K. Sudhakar and his management of the entire crisis. The party further went on to mention the 40% Sarkar campaign that they'd started. Remember, this is where they essentially allege that the BJP takes a 40% cut out of any contract with any third party. They've said that the BJP is taking bribes for all state-funded projects. It's now accused the BJP of making patients suffer and die because of these corruptive practices. And also down south, but now in a different state, BJP National President JP Nadda, while visiting the Kerala government, he slammed the Pinarayi Vijayan government in Kerala over corruption and the rise in what he's calling fringe elements in the state. This is while he was visiting the state. He took a potshot at the chief minister for the gold scam. He said that the heat of the gold scam has even reached the chief minister's office. Nadda further added that the CPIM government in power right now is trying to create a situation where the government will end up in a debt trap. Remember, the gold scam came to light in July 2020 when the Customs Department seized a consignment of about 30 kgs of gold that was sent to the UAE consulate in Kerala. Now, the accused in the case is Swapna Suresh. She, remember, alleged that the chief minister and his family members and a few others were directly involved in the scandal. Take a look at what JP Nadda from the BJP had to say first. The CPM government, the Pinarayi Vijayan government, which is working here, is a tainted government. It is taking the people to debt. We are very fast coming to a debt trap. More than 3,30,000 crore, 3,30,000 crores have been taken as a debt, and it has been doubled. If I talk about corruption, the gold scam, the heat of gold scam is engulfing the chief minister's office, and it is directly involved in that also, we understand. The support and the loss of the violence which is taking place and the law and order is coming down is also a very serious question which Kerala people are facing. भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। All right, we're moving now to the big story that will only become bigger in the next few years in the run-up to 2024. An opposition unity rally was held in Haryana yesterday. You had several opposition leaders who attended a grand rally organized by the INLD chief, Om Prakash Chautala. This is in Haryana's Fatehabad. Now, several top opposition leaders. You had NCP chief Sharad Pawar, Bihar chief minister Nitish Kumar, CPIM Sitaram Yechuri, and Shirmani Akali Dal President Sukhbir Singh Badal. They all attended that rally. Chief Minister Nitish Kumar urged all opposition parties to come together. Nitish, who remembers the Chief Minister of Bihar, said that if all the parties get together, the BJP won't be able to win 2024's Lok Sabha polls. He also added that he'd spoken to the NCP Chief Sharad Pawar and also requested the Congress to join them. Very quickly, I want to take you to what he had to say yesterday. Take a look. हम लोग दोनों लोग एक साथ बैठ करके मैडम से बातचीत किए हैं, तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिल करके देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे
और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज़ के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। इसी हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, वेस्टर्न यूपी हो, यहाँ के किसानों ने दिल्ली के दरवाजे पर 1 साल तक धरना आंदोलन किया, मगर देश की सरकार ने इनकी समस्या हल करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रिस्पांस पूरे देश में है और हम एक है हम लोग। और सोनिया जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। नीतीश कुमार को की जो विपक्ष के लोगों को एकजुट करने का जो प्रयास था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, विफल हो गया। उस रैली में केवल नीतीश कुमार एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो मौजूद थे। न तो अरविंद केजरीवाल वहाँ गए, न पंजाब के मुख्यमंत्री गए, मायावती या अखिलेश यादव। दावा किया जा रहा था कि 17 दलों के लोग भाग लेंगे, तो मात्र 5 दलों के लोग शामिल थे। देखिए, ये नीतीश कुमार लाख प्रयास कर लें, न तो वो एकजुट हो कर पाएंगे और न ही कोई उनको नेता मानने के लिए तैयार होगा। जनता पार्टी बीजेपी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी थी और यहाँ ये संख्या जो है वो लाखों में है। तो लोगों का उत्साह को देख करके निश्चित रूप से परिवर्तन आए। बिहार में नीतीश कुमार हमेशा सफल रहे और भविष्य में वो सफल रहे कि थर्ड फ्रंट बनेगा और बीजेपी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हुई। आज से कुछ साल पहले कलकत्ता के अंदर इस प्रकार से एक ऑपोजिशन फ्रंट बना था जिसमें सबने सब हाथ भी हिलाए थे खड़े होकर। उसी प्रकार कर्नाटका के अंदर भी एक फ्रंट बना जिसमें सोनिया गांधी भी थी और मायावती भी थे। और बाद में फिर जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। तो मैं क्या, इनका सिर्फ एक लक्ष्य है मोदी जी को कैसे हटाना, परंतु इनसे पूछे कि अल्टरनेटिव नीति क्या है आपके पास, एजेंडा क्या है, उस पर कोई जवाब नहीं। देखिए, सरकार वहाँ पर किसी को बख्शने वाली नहीं है। वो किसी पार्टी से रहे हों, परंतु सरकार ने सख्त से सख्त एक्शन लिया है। अब ये उनकी पार्टी तय करे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना या नहीं बनाना, और ये उन्होंने गहलोत से राय करनी नहीं करनी। चौधरी देवीलाल जी की 109वीं जयंती थी और हम सब लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया है। हम उनकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए यहाँ आए थे। ये कोई विपक्षी दलों की रैली नहीं थी। हाँ, यहाँ से एक शुरुआत आज विपक्ष के इकट्ठा होने की जरूर होगी। आज जयंती के दिन पर यह सम्मान समारोह हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि देश को आज संविधान को ठेस पहुंच रही है, एकता को ठेस पहुंच रही है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के अत्याचार, किसान, ये सारी समस्याएं सामने होने के बावजूद भी हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम करती रही है। इससे देश की एकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे आ जाएंगे ना भाई, शुरुआत तो हुई है, वो तो सोचिए अच्छे ना, बिगिन विथ इज ऑल्सो गुड थिंग। All right, it's now time for a